And the special occasion is, this is the first time he is addressing us as working president in the federation in our unit. Thank you, Ji, for the wonderful speech. Born in the year 1961 at Patna in the state of Bihar, he was post-graduated in Patna University and joined Bank of India in 1984 as a DRO. Trade union drew the energetic, aggressive young man into its fold within a short span of 4 years of service in the bank. When he was elected as the executive committee member of our Muzaffarpur unit in 1988, he went on to become the regional secretary of Muzaffarpur region in 2001. The inevitable responsibility as General Secretary of the Bihar unit of Bank of India Officers Association came to rest on the broad and strong shoulders of the young Turk in 2004 at the age of 43 years. He led the vibrant firebrand officers of the Bihar unit of Bank of India Officers Association with aplomb and ease ever since till date. The qualities and capabilities of this distinguished personality was naturally recognized by our federation, where he rose from DGS to president and then to the coveted position of General Secretary of the Federation of Bank of India Officers Association by a sheer outwork, care and concern for the officers' fraternity. He is popularly known as the Lion from Bihar for his vociferous speech in English and Hindi. He is none other than Comrade Sunil Kumar, who is the advisor of All India Bank Officers Confederation and General Secretary of our Vitally Federation. We now request him to come to the podium and deliver his keynote address, and let us have the pleasure of hear the lion roaring. Welcome, sir. Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. दोस्तों नमस्कार, वन्नकम। The president of this unit and president of today's function, my very good friend, Comrade Parsati. The chairman of Federation of Bank of India Officers Association, Comrade Madhusudhan. The working president, Comrade Nilesh. My other friends in the federation, Comrade Nagesh, Comrade Sunny. The architect of today's function, a very good leader, your General Secretary, Comrade Amarnath. Your General Manager and my younger brother, Comrade Sarda Bhushan Rai. Madam Devsena, the Zonal Manager of Chennai Zone. Deputy Zonal Managers of both the zones, Coimbatore and Madurai. I would have been happy to see them here, but one due to the illness of his mother and other due to some preoccupations, he is not able to come. Please convey him my best wishes and humble pranams. Sridhar, my very good friend and a very upright leader along with CP of AIBA, with whom we are always doing Mura Kusti. Again, we can have here today some glimpses of that you can see. Other gentlemen, Ashok and Ponjian, the representatives of the welfare organization, and my own Dada, Swami Dada, the General Secretary of the BOIOASZ Southern Unit, who was with me during my early days when I was Executive Committee member of Eastwell Bihar Unit. Comrade Nilesh, the budding leader of the Federation.
you have listened him. And all the newly elected office bearers, committee members of this unit and my dear friends, before I start my formal address, let me pay my homage to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. Both of them had their unparalleled contributions in building of this nation. I am badly missing Dr. VCK, my very good friend, your former General Secretary, my president, ex-president in the Federation, who is not well. And I owe a lot to him and all of my good friends who are sitting here when I was just struggling between life and death to this place. Always they were on my side, particularly Jai, Ahmad, Parsarthi and all my good friends were there, and doctor used to be my shadow. So I pray to the Almighty that he should be all right. I have been listening to your general manager, my younger brother, and I told him that he was telling me how much I should speak. I told him, the sky is the limit for you. Because you are one person whom I am seeing since long, and you have always tried to strike the balance. Only very recently when I came to know that you are losing your balance somewhere, then I came in between and both of us could set right the things, and that's why your NBG has, because my contribution is also there, so NBG has become the #1 pan-India. Congratulations to all of you, and madam to you also for bringing your Chennai zone to such a greater height. Attaining the height is not that important as maintaining the height is. So challenges will be more. Already both of them have spoken about the business figures, and I am not going to talk about the business figure. Only one objection I can take. All the time these announcers are telling me Lion of Bihar. A lion is always lion, whether he is in Bihar or he is in Karnataka or he is in Namibia or Africa or America. Because lion will never become a cat in some other country. If at all I am a lion, then I am lion everywhere. And thank you for the compliment. When I joined this trade union movement in year 88, the situation that time and the situation today has completely changed. We had no benefit, today we have all the benefits. That time we had not been questioning our leadership, today all the time I am answering to the constituency for any petty things also they will ask. Even not only, and that I could notice when Madam Devsena was to speak, I saw young ladies going out of the hall. I was not surprised, because ladies will never listen to the ladies. For that we are there, na? All the time we shall be listening, outside also, inside also. Hardly we get opportunity to speak. So the moment Madam finished her address, all of them came inside. So when I joined the trade union movement and found one coincidence is there, it was year 2005. I had been in Chennai to attend one AIBOC meeting, and from here I travelled to Bhopal and I met Sarda there, and he was the Joint General Secretary of MP and Chhattisgarh unit at that point of time, 80 friends. A very successful trade union leader, very capable a person. Biswajit was treasurer, Asu was that time committee member. So I vividly remember those days. And since then we are associated. He has worked with almost
all the persons present here on the dais, because when he became the NBG, South General Manager, Karnataka, Kerala, Andhra, and all were the part of that NBG. Later on it was bifurcated. So he has worked with all of them, and I know his capabilities. When you are doing trade union, you must try to see what is going to happen after 5 years, 6 years or 7 years. Comrade Swami Dada will vouch for it. When I was left with more than 12 years of the service, then it was the first time in Bihar we had established BOIOA Bihar. Even AIBOC was not having any organization of for the retiring people. We could foresee a day will come when this organization will grow, and this organization has to grow so that they can take up the issues of the retirees. Nilesh was telling, I will be talking in tidbits only, because many things I cannot talk to you right now. When Nilesh was telling, when I had gone for the insurance, I asked for the insurance in the housing loan. It was only given, later on it was given, that claim will be given to those who meet with an accident and they die. Accidental cases will be considered, no other cases. I further went and I asked for that. Then they said, how much bank will bear? Our bank is not in a position to bear it. Then I had the answer of it. Then we will make it contributory. The capacity of bank you take. The balance we will bear, but we want it to happen. Now when I was questioning their capacity, then they cannot tell. This much only we will give. Later on they agreed, and when the matter was discussed in the Central Consultative Committee meeting, then the question came, always comes. If board agrees, I simply said I don't know any board. Our representatives are not in the board, neither from the award staff side nor from the officer side. You are the board for us. If MD and CEO and 4 the EDs cannot take a decision, then it is same on us. The highest body of the bank is sitting here. We want the decision, either yes or no. We don't know any board. In principle, they had agreed, and the rest part Nilesh has already told you. Friends, we had never been doing this trade union at the cost of the other section or our counterparts. When our petrol limit was increased, Sridhar Bhai and his company created a lot of halla-gulla. This ALC, CLC, strike notice, falana, dhimka, that should happen also. And thereafter, on declaration basis, they got more. We got less. Petrol literates, we got more, and we should get more also. Reasons are there. So when I was pleading with them, I said that there should be increase for those who are taking it on the declaration basis. They said this expenditure, bank is not in a preparation to bear. We are there to help the bank. We are not any irresponsible organization. Either you give more than what they are getting, or you take. We will ask our members to sacrifice for the sake of the bank, as they did during ESPS time, that when the association was making an appeal, my Sridhar Bhai was opposing that. They had some other theory that time, and the ESPS was a success, and nobody is abusing it today. Even when the price has fallen down to less than 50% of what we had spent that time when we had to purchase it.
So we will contribute to the bank. But we don't want anything less than that. The officers should be given more. And that is how they agreed. Because they could not counter the argument. Argument should be based on certain facts and figures. Then we had this also. That how much expenditure is there and how much we are going to get. Almost all the persons who are sitting here from the Federation side, they have attended the Central Consultative Committee meeting or this screening committee meeting with me. Even last time, Parsarthi was also there. I go with the homework done and I have got reply of everything. And that is where the power of the knowledge is dependent. I know that when you are going for a negotiation, वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, इतना तो मुझे जरूर मालूम। वो सिर्फ ये बोलेंगे ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, नहीं बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता, ये भी नहीं बोलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम मान के चलते हैं कि नहीं होने वाला है वही हो जाता है, और जो होने वाला है वो तो हो ही जाएगा, इस बार नहीं होगा तो अगली मीटिंग में होगा। The housing loan. When we are talking about the housing loan, it is going to benefit from sweeper to escalate. They are going to be benefited. We are never doing this divisive trade unionism. We are always for the inclusive trade unionism. We are not divided on the basis of caste and creed. Of late, all these dirty things is trying to enter into the system, which we are duty bound that we should clean them, and that we will clean. Because we have got no caste, no religion, we are only officers of this bank. We are the bankers. Nobody knows you by your caste, nobody knows you by your religion. You will be known as a banker, as a family member of the Bank of India, and that is your identity, and that you should maintain. Don't go beyond that. If at all you want to go beyond that, then go for the Gram Sabha, Raj Sabha, Lok Sabha, Plana, Dimka. Such people have got no space in this industry. We all are the workers, we all are the laborers, we all are being guided by the same act. There is no different act for all of us. Officers are being guided by the BOIOASZ, award staff are being guided by Padai settlement. Matter is, thereafter nothing. We are not being governed by some other legislation or other rules or other regulations. Only two regulations are the important regulations by which we are being guided. Friends, very rightly Nilesh has said that after a State Bank of India, which has got a membership of 1 lakh, I think 67,000 taken together, nowadays it is very difficult to find who are permanent, who are on temporary basis, who are from which vertical, whether that he is from Reliance Payment Bank or some other NBFC. So it is very difficult to ascertain the number of the officers in State Bank of India, but take it together roughly 1,67,000 there. And after that we have got the maximum representation in AIBSA. And we are number-wise, we are 7th now. After amalgamation and merger of the banks, they have gone up with the total number. Yesterday evening, late night, I telephoned to Nilesh number, I was not getting, Parsarthi was with me, anyhow we could contact Amar, then Amar could make Nilesh to talk to me. I said, Nilesh, I am not coming to Goa on 13th I had to go to the meeting. Then he asked me why. Wage negotiation, this charter of demand, finalization committee meeting is there at Mumbai on 13th. You will also not go. Whatever expenses you have made for your meeting, I have nothing to do with that.
Because I know that my presence is going to make lot of differences in finalization of the Charter of Demand. I don't want to miss that opportunity. Whatever be the reason, otherwise I shall be repenting that if I would have been there, perhaps I would have got it done. What he was telling about the learning allowance, I was just sharing with Sarda. That during the negotiation, the rural allowance concept came, the learning allowance concept came. I was totally against the learning allowance concept. Totally. I was prepared to fight to any extent. No learning. Nobody learns today. Everybody has got the facility of Facebook and WhatsApp. They will learn everything from there. What medicine I have to take, that they will learn from Google. They don't need the doctor. Google will tell them, ये बीमारी है तो ये दवा खाना है. So social media is there. That is the great teacher today. Most of us do not read the manuals, the bank circular, which he was teaching for or Nilesh was teaching for. My dear friends, that is one advice that I would give you. That if at all you have to save yourself, just you save yourself, the institution will be saved by itself. Don't land yourself in trouble, nothing will happen to the institution. You have to save yourself, and for that, you should be a knowledge worker. So when the talks was about to finalize, joint notes were to be signed, then I told the chairman, who is the managing director in the State Bank of India today. That time he was deputy managing director of the State Bank of India, and he was heading the committee for the officers. I said, sir, ever since I entered this IBA hall, you were asking for only learning allowance. Today you have accepted all our demands. Sir, learning allowance, I don't want to go out of this hall with a heavy heart. Whatever you were asking, we are getting through you. Whatever we wanted and whatever you wanted, you are not getting. Sir, you accept this learning allowance. He has started shouting at me. From where money will come? All the time you had been opposing. I am sorry, sir. That time I should not have opposed, but now I have realized the importance. Because that we were going to get over and over. At least 100 rupees. You keep 100 rupees learning allowance. And friends, that is how this learning allowance was agreed upon by him. So during the negotiation also you must know when what we have to ask for and what we have to let it go for the time being. Otherwise learning allowance was not coming. On 17th of the October we felt very bad, we were very dejected. We had gone there to sign the joint note. Sridhar Bhai and his company left Mumbai without informing IBA and without informing us that they will not sign the joint note. We were ready to sign the joint note. The words which I used there in IBA, perhaps I will not repeat it. They all were listening. I went up to the extent telling that just bring the IBA chairman before us for 10 minutes. उनके घर के लोग उनको पहचानेंगे भी. 10 मिनट के लिए वो चाहिए. I am talking it on the open forum. Anyhow, but that was also beneficial for us. Later on, whatever they had been negotiated, when we came to know, we got better than that. So that time we felt that they had duped us. Actually, whatever they did, we got more than that. We had agreed for this interval of 3 years only for the stagnation increment. After they gone for 2 years, we got for 2 years and we got one stagnation increment for AGM also, Assistant General Managers. Despite knowing this, while sitting in the office, some of them must be abusing my members. काम चोर है, कुछ नहीं करता, अभी घर जा रहा, 8 बज रहा है, क्यों घर जा रहा?
अरे तो 8 बजे नहीं जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे? 10 बजे आएंगे तो 5 बजे जाएंगे। And the best thing which is happening, and it is not happening, then I am telling to this part, that you have got a general manager who will never ask you to sit till late. Other day when I was going to meet Sata, let me tell you one thing. Parsarthi told me, आजकल वो ना आपके छोटे भाई है ना, आजकल बहुत गुस्सा आते हैं, बोलते लात मारेंगे। शारदा तो ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, you have told me. The moment I entered and I sat before you, now you recollect everything. Then, once I come to Chennai, always he will be with me. Both of us had a lot of discussion. It was not worrisome for me that he was losing his cool. It was not worrisome. अभी ऐसे ही बात हो गई है कि अभी कोई गाली नहीं देता है तो हमको लगता है whether he is okay or not. आज स्थिति ये हो गई, वो गाली नहीं दे रहा तो चिंता हो जाती है क्यों गाली नहीं दे रहा। But so far as I know, Sardar, a person who has remained always very courteous, always very disciplined, something should not go wrong with him personally. Then I asked him, he is sitting here, हो क्या गया? क्या हो गया? Do you think everything you can change or I can change? I know the problem which you are facing, but my people are not responsible for that. आज देवसेना जोनल मैनेजर की कुर्सी पे बैठी हैं, इनको जनरल मैनेजर क्या बोलेंगे उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं तो इनसे यही उम्मीद करूंगी ना, she will be acting as a shock observer, and that this is the kind of relationship which we have. नीलेश ने कहा, एमडी बोले 1 महीने तक मैं वो नहीं करूंगा। मैंने जनरल मैनेजर को शेयर भी किया, 1 महीने तक कोई वीसी नहीं, कोई ये नहीं चलेगा। पाठक जी भी बहुत चिंतित, मैंने भी कहा कि एमडी ने लगता है गलत समझ गया। अब पाठक जी हमको जबरदस्ती बोला आप एमडी से मिल के जाइए, बात कर लीजिए। हम लोग 2 दिन के बाद बात करेंगे, नहीं आप बात कर लीजिए तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि मैं कल बात करूंगा, आज ही ताजा ताजा हो गया, छोड़ दीजिए। ही वॉज इंसिस्टिंग। जब उनके अनिल वर्मा जी को फोन किया गया, उनके सेक्रेटरी को, तो उन्होंने कहा साहब को, जब उनको नंबर जब ये कॉल फॉरवर्ड किया गया तो उन्होंने कहा कि ही वॉज वेटिंग फॉर मी इन फैक्ट। देन आई वेंट टू हिम एंड देन वी हैड ए डिस्कशन। हमने कहा कि ये डिसीजन सही नहीं है कि हम नहीं करेंगे, रास्ता में कांटा है तो हम पैर काट लेंगे, ये डिसीजन नहीं होगा सर। हम रास्ता में जो कांटा है उसको साफ कर देंगे। बोले सुनील बैठो, then we talk a lot of things. Very good person, very good friend of mine also, and we had been discussing, yes, frustration is there, but whether frustration is going to bring results. I also know that all our 4 EDs are not on the same page, which I have been telling in the meeting also. मैंने ये पूछा कि आप लोग ऐसे लड़ते हो तो मुझसे बाहर में लोग पूछते मैं क्या बोलूं। Then I had a talk with the MD. भाई ठीक है, एमडी ने वो भीसी और वो नहीं किया, बाकी लोग कहाँ माने। तो एक चीज होता है ना, वो भीसी उसी का ना बहुत लोगों को जरूरत नहीं, उसको हिडिस है। उसको लगता है अगर हम भीसी नहीं करेंगे तो आई एम मिसिंग समथिंग। अभी वो एक जो पढ़ाई ये चल रही है, आज कितना होगा, सुबह में एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कितना रिकवरी होगा, और शाम में कि कितना रिकवरी हुआ। हमारा भी बहुत सारा मैनेजर इतना स्मार्ट है ना, वो सिर्फ पेस्ट कर देगा, कॉपी पेस्ट। उसको भी मालूम है कि अगला पढ़ने वाला नहीं, 15 दिन से एक ही फिगर रिपीट होता है। अदरवाइज आप उस ग्रुप के तमाम फिगर को जोड़ लीजिए, जो एनबीजी जनरल मैनेजर्स का ग्रुप है या जोनल मैनेजर्स का ग्रुप है, और आप जॉट डाउन कर लीजिए 2028 तक का टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं कुछ करने के लिए। Whom we are we bullying and what culture we are developing. Bank of India was never having this sort of culture.
our bosses, very, very considerate. They always believe in human resource development. मुझे नहीं लगता है कि आज भी कोई भी बॉस ऐसा है कि लोगों को बोले आपके जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम है हमको छोड़ दीजिए और जो भी मेरे गोल्स हैं उसको आप देख लीजिए, तो he or she will fail. Because everybody comes in the office to work, bearing that few of that category which Nilesh was telling, sitting in the administrative office, and for that we have also taken a decision, and I would like to compliment your NVG General Manager was first to implement that downsizing, rationalization of officers in the administrative office, because we want more legs in the field, because they are going to bring the business. A boy or a lady of 3-4 years of the service, how they are going to guide a branch, how they are going to motivate a branch, and what they are learning. That's very important. They should learn. We had been working in the field. Till my last day I was heading a branch. We had been working. I think you came to my branch, no? That time. Prior to coming to Hyderabad. Or even going to Singapore. Prior to going to Singapore also, he came. So I was heading a branch. I know the pinches which branch is having. I had been always supporting the bank. I have never criticized the problems which were coming while we were going for the upgradation. But I was very, very critical, and I too was using certain words which I should not have used when I talked to the EDs personally. 2 EDs, Nilesh was with me in their chamber. मर जाएगा मेरा लोग, क्या करेगा? अभी कर रहा है, कल को मना कर दूंगा तो नहीं करेगा, ये बैंक ऑफ इंडिया. एक बार बोल दूंगा नहीं करना है, छोड़ देगा. Don't try to create unnecessary pressure. Try to solve their problem also. They are dying, not you are dying. You are simply shouting. Even I asked one of them, what is your contribution to this bank, you tell me, what you have done. Wherever Bank of India stands today, that stands for, because of the cadre which has served Bank of India. You are not cadre from Bank of India. How you will understand all the inherent problems or the strength of this bank? Please don't do it. Because what is happening in Bank of Baroda, that is not going to bring any solution to the problem which Bank of India is having. Bank of India is having some different problem, Bank of Baroda is having some different problem, State Bank is having some different problem. आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जितनी भी चीजें करनी है मैं बता रहा हूं और उम्मीद है कि आप करेंगे. समय से ऑफिस आइए और समय से घर जाइए और उतने समय में नो डाइवर्शन. कंसंट्रेट ऑन योर बिजनेस. वो व्हाट्सएप वो छोड़ दीजिए. मेरा जब चेन्नई में ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन तक तो मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था. तो जिस दिन मेरा मोबाइल आया, मैं तीसरे या चौथे दिन निकलने वाला था हॉस्पिटल से, तो मैं सोच रहा था पता नहीं चेन्नई की जगह पे यहाँ पांडिचेरी आ गया होगा और चेन्नई चला गया होगा उधर मैंगलोर में. मेरा 3 दिन 4 दिन मेरा मोबाइल नहीं चलाई तो दुनिया ही खत्म हो गई. फ्रेंड्स, व्हेन आई केम आउट एवरीथिंग वाज एट इट्स प्लेस. तो उस दिन से हमको बहुत रिलीफ हुआ. आपने देखा वहां बैठ के मैं कुछ मैसेज भेज रहा था बिकॉज सर्टेन इन्फॉर्मेशन AIBOC wanted. That's why I was sending out some suggestion I was sending. Otherwise generally I will not pick up phone. तो आप अपने आप को डाइवर्सन से रोकिए. Lot of toxic materials will come to you, जिसका कहीं कोई आधार नहीं होता और आप उससे बॉग डाउन हो जाते. और कम से कम इतना जरूर करिए कि जब आप घर जाइए तो आपके बच्चे ये नहीं कहे कि मम्मी अंकल आए, उनको ये कहने दिया पापा आए.
आपको थोड़ा लेट हो जाए तो वो बच्चा पूछे पापा ये 10 मिनट कहाँ हो गए। और मैं आपको बोल रहा हूँ आप समय से आइए और समय से जाइए, इसलिए कि आप सभी इंसान हैं, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे नहीं मालूम, मेरा मानना है आप लोग सभी इंसान हैं और सभी जिम्मेवार इंसान हैं। इसलिए अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव अगर आप हो रहे हैं तो इंसान की फितरत नहीं है। अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव कौन होता है मैं नाम नहीं लेना चाहता, मत होइए। वो कहते हैं ना कि हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर बैठे हैं जिनके लिए रोटी कमाना है। मैं खुश हूं कि घर से पैगाम आया है, मैं खुश हूं कि घर से पैगाम आया है, मगर गम है कि उन्हें अपनी खैरियत बताना है। ये काम मत करिए। समथिंग विल हैपन टू योर फैमिली, हम लोग खड़े हो जाएंगे, शोक सभा कर देंगे, बीएस का पैसा आपको भेज देंगे और भूल जाएंगे। What will happen to your family? Just give a thought. रही बात दूसरी की, अगर आप बैंक में आते हैं तब किस पे एहसान कर रहे हैं? अगर एहसान कर रहे हैं तो मत करिए। You are earning your bread and butter. If bank will not be there, then what will happen to your dreams? What will happen to your future plans? आपकी पहचान क्या होगी, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपका रोजी रोटी कहाँ से मिलेगा? आप में से कोई भी आदमी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में चले जाइए। स्टैंडर्ड बैंक जो है वो बहुत अच्छे बैंक में उसकी गिनती होती है, फॉरेन बैंक है। एवरेज वहाँ ऑफिसर्स की सैलरी 35 to 40,000 है। बाकी जो है PLI है। अभी आपने देखा, अब ये सेटलमेंट की बात करते हो, नाउ यू सी वेयर दिस वर्ल्ड इज गोइंग, यू कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड। अभी वो बहुत ज्यादा वो आ रहा है, श्रीधर भाई आपने भी देखा होगा, नेताजी का सफाई आ रहा है बहुत। बट फैक्ट इज फैक्ट कि नाबार्ड में जो वेज सेटलमेंट साइन हुआ है, दैट इज ट्रंकेटेड वेज सेटलमेंट। आपको पहले 10 रुपया मिलता था, अभी 8 रुपया मिलेगा। Have you ever thought of कि इस तरह के भी वेज सेटलमेंट इंडस्ट्री में होंगे? That is just a beginning. And you see my tweet, and I have quoted the source also. ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ये अलग बात है कि वहां पर मेजोरिटी यूनियन AIBA का है, तो अभी वो सफाई मतलब उसमें चल रहा है, उसको डिफेंड करने का प्रयास किया जा रहा है। बट I have never raised accusing finger towards any organization. I have simply tweeted that what has happened and what is happening, and these are the impending dangers. अभी हम देखते हैं ना, लोग बोलते हैं CPC चाहिए, CPC चाहिए। CPC is not going to be there now. Earth Pay Commission is not going to be there. आप लोग CPC कर रहे थे तो बहुत पहले, हम लोग हमेशा बोलते थे ना, हमको मालूम था। अभी गवर्नमेंट CPC अपना वो खत्म कर दी, CPC खत्म, उसका कोई गठन नहीं हुआ। तो हमारा जो वेज सेटलमेंट है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं बाइपर्टाइट, अरे हमारे लिए बाइपर्टाइट नहीं है, बाइपर्टाइट इन लोगों के लिए है। द मोमेंट इट इज साइंड इट बिकम्स अ बाइंडिंग फैक्टर ऑन द मैनेजमेंट। हमारे साथ वो नहीं है, हम तो ज्वाइंट नोट साइन करते हैं एज पर OASA। उसको with the prior sanction of the government and approval of the Reserve Bank of India, the bank's board will pass that. और बैंक बोर्ड जब पास करेगा तब वो इम्प्लीमेंट होगा। आज आप देख लीजिए कि आपको नियर टू एक्चुअल पेमेंट होता है एडहॉक में। आप 8th ज्वाइंट नोट की बात छोड़ दीजिए, अभी तो 6th 7th ज्वाइंट नोट का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कल को बैंक बोलेगा पैसा वापस लेंगे, आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आप क्या करिएगा? लेट अस कम आउट ऑफ दिस पेटी पॉलिटिक्स। हमारा दो ही चीज है। When we joined this bank and that time very few of us were there in the bank. संगठन ने बोला पेंशन नहीं लेना है, हम लोगों ने कर दिया नहीं लेंगे पेंशन।
बाद में वही पेंशन लेने के लिए पैसा देना होगा, हमने पैसा देके पेंशन ले लिया। भरोसा ये है, विश्वास ये है, संगठन पे विश्वास रखिए और बैंक ऑफ इंडिया को बचाए रखिए। रेस्ट, बिकॉज टाइम कांस्टेंट इज देयर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय both all the three speakers who spoke and heavily supported by DJDMs. मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था। Now we are going to call Zonal Manager of Chennai, Madam देवसेना। चेन्नई वाले ताली बजा रहे हैं, कोयम्बटूर वाले और वो हाथ पीछे किया। जैसे ही मदुरई का नाम आ रहा है तो चेन्नई वाले और कोयम्बटूर वाले हाथ नीचे किए हुए, मैं सब देख रहा था। अरे ब्रिंग दिस वननेस। ये अच्छा है कि एनबीजी जनरल मैनेजर बोलने गए तो सब ताली बजा। So that is the beauty. We all are one. हो सकता है श्रीधर की कंस्टिट्यूएंसी अलग हो, मेरे कंस्टिट्यूएंसी अलग हो सकता है डिफरेंसेस हो, एनिमोसिटी नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। वक्त आने पर एक दूसरे के साथ खड़ा होंगे। I cannot forget the words which Sridhar used to tell me when I was struggling. It happens only in Bank of India. When I was admitted, our MD and CEO, almost for full day he was with me. In the late night, our senior most ED came, our general manager HR came. That bondage perhaps you will not find anywhere. अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में रहना है तो बैंक ऑफ इंडिया कभी मत छोड़ना। आजकल मैं सबसे ज्यादा परेशान होता हूँ, एसोसिएशन ऑफिस में जाता हूँ तो दो लोगों को देख करके, समझाने के बावजूद वो चले गए बीपीएससी क्वालिफाई करके बिहार में बिलिंग सर्विस में, और 1.5 महीना नौकरी करने के बाद आके रोज हमको पकड़ते हैं कि हमको बैंक ऑफ इंडिया में वापस आना है, हमको नहीं रहना। सैलरी, दे आर गेटिंग सैलरी मोर देन व्हाट बैंक वाज गिविंग। रोज मैसेज आएगा, सर आप ही हमको वापस करा सकते हैं। कैसे वापस कराएंगे? रिजाइन करके, नो ऑब्जेक्शन लेके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप चले गए, फिर आईबीपीएस आएगा तो भरो। So that bondage and that culture Bank of India is having, wonderful, and you all are lucky. और आप लोगों में से अगर ये लगता है कि देखिए मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, अभी आपने देखा कल अमर हमको बता रहे थे कुछ लेडी लोगों का ट्रांसफर हुआ, कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ, ये हंगामा खड़ा किया। आगे बोलता है दे ऑल आर कंफर्टेबल। यस, इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी टू अपोज द इनर्शिया। कोई चेंज होगा तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैंने एक आध बार बताया भी होगा, जो नए लोग हैं उनको सुना दूं। अभी तो थोड़ा सा घर बड़ा हो गया है, पहले मेरा बड़ा छोटा सा घर था मुजफ्फरपुर में, तब शारदा गए हुए हैं, शारदा भी गए थे, तुम घर गए थे, बहुत पहले गए थे ना। तो वो ऊपर वाला नहीं था, नीचे 2 रूम, बाद में हमने ऊपर एक हॉल सा बना लिया और एक बगल में भी। तो जिस दिन सुबह सुबह बिना मांगे हुए 2 कप चाय आ जाता था तो अंदर से बहुत डर लगता था, आज कुछ होने वाला है। श्रीमती जी बिना वजह मुस्कुराए जा रही है, पता नहीं आज मेरा क्या होगा। उसके बाद अचानक वो चाय लेके आती, बोले अजी सुनते हैं, तो कहाँ विकल्प कहाँ है कि नहीं सुने। हाँ बोलिए। वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? और अंदर अंदर बोल रहे हैं क्यों आ रहा है बिना मतलब का। बोलिए आ रहा है तो लोग रात में रोक लेते हैं। अरे 1.5 किलोमीटर पर तो घर है, बिना मतलब का भी आते रहता है, और रात में क्यों रहेगा। तो खैर वो रात में रुकने के लिए तैयार हो गया। श्रीमती जी हमको बोलती कि ऐसा है कि हमारा बेडरूम है ना थोड़ा बड़ा है, सोफा लगा हुआ है, टीवी है, तो उन लोगों को इसमें टिका देते हैं ना। एक रात की बात है, हम लोग बगल वाले रूम में चले, फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं, ठीक है। जिस दिन हमारे घर से कोई आदमी आता, सुबह से बर्तन गिरने की आवाज आती किचन, सर में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द,
ये आपके घर के लोगों को कोई काम नहीं आ गया, धमक जाते हैं। फिर शाम होती वही बात होती, फिर हम बोलते कि उन लोगों को यहाँ टिका देते हैं। और हम लोग बगल वाले में चल जाते हैं। एक रात की बात है, वो रात भर सोने नहीं देती, आपको मालूम है ना। मेरा बेड चेंज हो जाता है तो उनको नींद नहीं आती है, वो लोग इसमें नहीं रह सकता था। तो एक घर में, एक छत के नीचे जो हमारा अपना घर है, अगर मेरी पत्नी को एक रूम बदलने से इतनी दिक्कत हो सकती है, तो आपका तो शहर छूटता है, आपका राज्य छूटता है, तो दिक्कत तो आपको होगी। आई एम वन पर्सन जिसने कि कभी भी बिहार से लोगों का कोयम्बटूर ट्रांसफर हुआ होगा, मदुरई हुआ होगा, चेन्नई हुआ होगा, मैंने कभी भी मैनेजमेंट को ये नहीं कहा कि ये नहीं जाएगा। क्यों? अरे मैंने तो उन लोगों को देखा है जिस दिन कि चेन्नई के लोग और कर्नाटक के लोग बिहार में बैंकिंग करते थे, जबकि 4 ईयर ट्रांसफर फार्मूला में एग्री हो जाता था और उनका रिलीवर नहीं मिलता, तब 6 साल में लोग जाते थे। और तब तो फिर वही था कि मैं खुश हूं कि घर से पैगाम आया है, तो पैगाम भी नहीं आता था। वो आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेन कॉल आपको बुक करना होता था। ट्रेन में अगर आप चढ़ते तो ट्रेन पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तब वंदे मातरम नहीं था, बुलेट ट्रेन नहीं था, एंड दे हैव सर्व्ड, एंड दैट टाइम बैंक वाज नंबर 1। ये सारा पॉलिटिक्स, ये सारी गंदगी सिर्फ इसलिए आ गई कि लोगों का मूवमेंट रुक गया। एंड योर फेडरेशन इज कमिटेड फॉर that this movement should be there. A stagnant water will spoil the pond. ये होगा, you should be mentally prepared. अदरवाइज पता चलेगा कि आप उसी में रह गए उलझ के। हम गए एक बार पंजाब, हमारे यहाँ के लोग थे, हम बोले कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला कोई दिक्कत नहीं है। एक क्यों दिक्कत है, क्या है? बोला सब बिहारी समझता है। अरे तो तुम बिहारी का थे यार, तुमको बंगाली कैसे समझेगा? और बिहारी है तो ठीक है ना। अरे तुम्हारी चर्चा हर जगह होती है, चाहे जिस रूप में हो। कुछ जलन से तुमको लुक डाउन करेंगे, कुछ ईर्ष्या से लुक डाउन करेंगे, कुछ तुमको आदमी बहुत तारीफ करेगा। ये बिहारी की ना इतनी तारीफ भी लोग कर रहे थे, चाहे मन से करें या बेमन से करें, हमको अच्छा तो लग रहा था। तो दिस मूवमेंट विल हैपन, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट यू शुड बी अ नॉलेज वर्कर। आपको नॉलेज वर्कर होना चाहिए। आज ये कंप्लायंस के जो इशू आए हैं, कंप्लायंस के इशू क्यों आए हैं? आप में से कितने लोगों को हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का सर्कुलर आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठा दीजिए। मैं उसमें से कुछ नहीं पूछूंगा कि सर्कुलर में क्या है, अब हाथ उठाइए, बताइए। जब आप हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का इंपॉर्टेंस आपको मालूम नहीं है, कंप्लायंस के इश्यूज तो होंगे। एंड फॉर दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, फॉर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, दैट वी आर नॉट इंश्योरिंग कि आपका ऑर्डर आज हो जाएगा, होगा कि अभी आप सेकंड मैन को चार्ज देकर चले जाइए, एज इफ यू वर ए गॉड सिटिंग इन द ब्रांच। The moment your order has come, you have become a devil. You are unwanted. You have to leave the branch. Why? Why I should not follow the system and procedure of the bank? You are talking of the expenses, whether we are going for analysis of BR 39 or BR 40, whether we are going to check it. हमारा AMC का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, whether AMC वाला is giving us the service. Who will take care of all these things? For that you people are not responsible. For that, yes, when I point out towards the dais, I am also responsible. But since your general manager, yeah, other senior leaders, they have done it, they should ensure that it should happen. Otherwise, this compliance issue will be there. Your MD, your executive directors will be humiliated by the Reserve Bank people, and that is not their personal humiliation, that is humiliation of Bank of India. So please, God, for God's sake, compliance should be your, उसको उठा देना। रात भर काम किया बैंक में,
उसको उठा दो उसको, हाँ उठ जाओ, पानी वाटर, यू हैव बीन वर्किंग, उठ जाओ। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप ये चीज आपकी चिड़ी की, दैट इज ह्यूमिलिएशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की ये बात नहीं थी, बैंक ऑफ इंडिया का बहुत कदर था बैंकिंग इंडस्ट्री में, और आज भी हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, आप कंप्लायंस जरूर करिए, यू डू इट कंप्लायंस। कंप्लायंस करने के लिए अगर किसी दिन महीना में आपको लगता है कि हमको संडे को जाना है, जरूर जाइए। हमारा कहना है कि nobody should force you to work on Sundays and holidays. It does not mean that when these exigencies arises, you will not go. There should be self realization कि हमारा कितना काम रह जाता है, because by doing that you are going to save yourself, you are going to save the institution, you are going to save the prestige of your bank, because you have a future in this staff. आज हम वो नहीं देखते हैं कि रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, इसलिए नहीं देखते हैं कि यहाँ रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग का मतलब ये हो गया कि आप लेट आवर्स तक बैंक में काम कर रहे हैं, अब कोई जाके आपके घर में दस्तक दे रहा है। वी हैव नॉट सीन दिस कि आप लेट आवर्स तक बैंक में बैठे हो, घर में दस्तक दे रहा है दूसरा, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। हमको वही स्लोगन याद है, यू हैव ए फ्यूचर इन दिस स्टार, यू ऑल हैव ए फ्यूचर इन दिस स्टार। So my dear friends, take it very seriously. और वेज सेटलमेंट वगैरह का चिंता छोड़ो, हम हैं ना देखने के लिए और करने के लिए, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर 8th ज्वाइंट नोट में हुआ, नीलेश was like my shadow, and this time also on 23rd when I was not there, he was inside. Only the general secretaries and were permitted from the other affiliates, AIBOC president and general secretary. Third person was Nilesh inside. लेकिन नीलेश निकला तो बोला, सुनील सर मजा नहीं आया, आपकी कमी सबको खलती। ठीक है, फिर अभी भी सेटलमेंट होगा तो आएंगे ना, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी वन साइड कम्युनिकेशन। Lot of rumors, lot of things are going, फैमिली पेंशन कैसे मिला कैसे मिला। फैमिली पेंशन को पाने के लिए जो टर्न एंड ट्विस्ट आया, he was witness to all the events when I entered there. आज भी हमारे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में भेजते हैं, पेंशन फंड इतना है, ये है वो है, इसमें ये करना है वो करना है। उस पेंशन फंड की एक्चुअल स्थिति आज क्या है, आज यील्ड हमारा क्या है, आज जितने लोग रिटायर कर रहे हैं उसका ग्रेच्युटी, वो सारा चीज पेंशन फंड से जा रहा है, उसको हम शायद कैलकुलेट नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करने वालों की संख्या घट गई। जो एलपीएस वाले लोग हैं बोलते हैं ओपीएस चाहिए, थोड़ा सा साथ दो यार ओपीएस दिला देंगे, इसलिए कि तुमको ओपीएस नहीं दिलाएंगे तो मेरा तो पेंशन गया, हम खाएंगे क्या, या यहाँ बैठे लोगों के पेंशन के क्या हो। Until or unless new persons are contributing towards the pension fund is not going to survive. और रही बात हैंड होल्डिंग की, तो शारदा ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, वो बाप और बेटी। अब मैं बाप और बेटा की कहानी बस उसी से मिलता जुलता सुना देता हूँ। वो एक फिसलन भरे रास्ते पे वो बाप चल रहा था, पीछे पीछे बेटा चल रहा था। तो बाप ने कहा बेटे से कि जरा संभल के चलना, ये फिसलन है गिर जाओ। बोला पापा संभल के आप चलिए, क्योंकि मैं तो वहीं पे पांव रख रहा हूं जहां आप पांव रख रहे हैं। आई एम फॉलोइंग योर फुटफॉल्स। इसको आप हैंड होल्डिंग बोलिए या फुट होल्डिंग बोलिए। So you all have to follow the ethics, the good practices, the rich heritage, the culture which this bank was having. For God's sake, इस सोशल मीडिया की वजह से दूसरे बैंक में क्या हो रहा है, ये उसको रहने दीजिए।
हम अपने आप को देखें, बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना होने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर ठीक रखेंगे, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते। भैया सरकारें कोई भी आएंगी, कोई भी जाएंगी, अपने प्रायोरिटीज के अनुसार चलाएंगी। सरदार ने बहुत अच्छी बात आपके जनरल मैनेजर ने एक्सप्लेन किया, हाउ दिस इकोनॉमी मूव्स एंड व्हाट हैज हैपेंड टुडे, परहैप्स यू आर नॉट अवेयर। आज वेस्ट बंगाल की स्थिति क्या होगी? सिंगूर में 1000 एकर्स का लैंड दिया गया था नैनो के लिए, वो आंदोलन चला, कितने वर्कर्स का माथा फट गया, सारा पैसा चला गया। वो किसका पैसा गया? देश का पैसा गया। अब क्या कोई भी ऑटोमोबाइल वाला लोग उसके बाद जल्दी हिम्मत नहीं कर रहा था। टुडे द चेन्नई हैज बिकम द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिकॉज they are getting all sort of things which one industrial house needs to have. तो समय बदलेगा। वही ममता बनर्जी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, चौपट करके रख दिया। कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी ने तो वो शुरू किया था। ये मानकर चला जाए कि ज्योति बसु या वासुदेव भट्टाचार्य जी, वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग आंदोलन ज्यादा करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उस समय बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया था। सिंगूर का सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से विरोध करके आज क्या हो गया? वेस्ट बंगाल में सारे फैक्ट्री, सारा चीज बंद हो गया। मिच्छी लाच है, हर चीज में मिच्छी लाच है। वो एक जुलूस निकल गया 5 आदमी का। सरकार कुछ भी करेगी। मैंने कहा कि आपको ट्रंकेटेड वेज सेटलमेंट आपने देखा है, अभी 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। अभी आपने देखा होगा कि ये है कि बैंकों में साल भर के लिए ये किया जाए या 1-1 महीने के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाए, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस। सब चीज आउटसोर्स कर देंगे, बाउंसर्स है रिकवरी एजेंट हो जाएंगे। आपका क्या? इसलिए आप अपने इंपॉर्टेंस को कम मत होने दीजिए, आप नॉलेज वर्कर रहिए और खुद का दुश्मन मत बनिए। और ये हाथ पात जात पात से ऊपर उठ जाइए। कोई कहीं एप्लीकेशन दे के नहीं आया था कि किस जात में इनको पैदा लेना है, और जो एप्लीकेशन दिया था वो महान व्यक्ति रहा होगा, इसलिए वो छोड़ दीजिए। वो सब अपने अपने कार्ड खेलते हैं अपने जीने के लिए। डोंट फॉल इन लाइन विद देम। बी ए ट्रू बैंकर, थिंक अबाउट योर बैंक, थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे याद है, इट वॉज 2 June 2016 in Chennai, AIBOC meeting. I had opposed merger of associates one with the State Bank of India. I think Madhu was that time in the body. पूरा स्टेट बैंक वालों को खराब लग गया कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। अरे विरोध में मर्जर क्या कर रहा था? उन्होंने कहा ये हमारा फैमिली मेंबर है, तो हम बोले ये भारतीय महिला बैंक, वो तो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, उसका मर्जर क्यों हो रहा है? 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर हुआ अभी तक। एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का हुआ 1993 में, when our AIBA had written to the then finance minister Manmohan Singh ji that we don't need so many banks in the banking industry, and thereafter the first merger has taken place. Second, when the State Bank, ISWAP and NCB welcomed the merger, then Bharatiya Mahila Bank was merged with State Bank. तो हमने तो उस समय विरोध किया था। हमको मालूम था कि अगर आज विरोध नहीं होगा तो कल को क्या होगा। उस समय विरोध नहीं हुआ। मैं हर जगह, हमसे लोग पूछता भी है आपने उस समय क्या किया, हम बोले कुछ नहीं किया। We failed as a trade union. We could not visualize this. तो आपको देखना पड़ेगा आगे। और रही बात की नीलेश ने कहा है, नीलेश ने बहुत अच्छी बात कही है, but I will simply give you a word of caution. What happened on 19th July 1969 when 40th bank were nationalized?
That was not by any act of the parliament, that was by the ordinance. तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में कोई बिल लाने का जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेंस से आपको प्राइवेटाइज कर देगा। इसलिए वो टेबल हुआ या नहीं हुआ, that should not be reason for your complacency. 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक नेशनलाइज हुए, 9 अगस्त को वो पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, सेम डे पास। तो हो सकता है प्राइवेटाइज किसी भी बैंक क्या कर देगा, और कर क्या देगा, अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर लेगा, शेयर उसके पास है, ऑक्शन कर देगा, क्या करेगा। तो आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूर हम निभाएंगे, दैट वी विल कैरी आउट, बिकॉज दैट इज आवर ग्रेट स्ट्रेंथ एंड वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय द जनरल मैनेजर दैट हाउ, एंड लेटर ऑन सपोर्टेड बाय नीलेश टू। बट हमको भी देखना पड़ेगा ना धंधा। हम भी एक मारवाड़ी के जैसा दुकान खोल के बैठे, 2 पैसे नहीं कमाएंगे तो हम क्या करेंगे। और एक बात आप ये जान के चलिए, ये थर्ड पार्टी से कुछ नहीं होने देना। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि थर्ड पार्टी जरूर करिए, सिर्फ LIC के अलावा कुछ मत करिए। इसलिए LIC के लिए करिए, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि LIC पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो आज अगर LIC को जरूरत है तो हमको आगे आना पड़ेगा, इसलिए कि हमको जब Tier 2 कैपिटल की जरूरत थी तो LIC आ गया, और LIC आ गया तो हमने ट्रस्ट में से पैसा LIC को दिया। हमारे भी यहाँ पर नीलेश ट्रस्टी हैं, नीलेश यहाँ बैठे हुए। आज भी गांव देहात में चले जाइए, भले किसी प्राइवेट कंपनी का कोई पॉलिसी खरीदता है, गांव में पूछिएगा कि किससे क्या करा, क्या है, बोला LIC लेके आए। वो कभी भी नहीं बोलता है वो स्टार दाइची का पॉलिसी है, कुछ हम उसे नाम, वो तो हमारी संस्था है स्टार दाइची का नंबर 1। वी शुड नॉट मिस इट, वी शुड हैव इट इन आवर बास्केट। When customers come, potential customers come, we will tell them about the product, but we should not push it, we should not missell it. जिसको जरूरत होगी वो खरीद लेगा, जिसको नहीं जरूरत होगी नहीं खरीदेगा। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, इसलिए संगठन का बहुत ही ये है कि भैया थाली में बहुत सारा चीज है, जिसको जो मर्जी आएगी खा लेगा। बुफे में बहुत सारा चीज लगा हुआ, किसी को पकड़ के जबरदस्ती ठूसिए ना, वो फिर आएगा ही नहीं आपके यहाँ कभी। एंड वी हैव बीन लूजिंग कस्टमर्स, और बहुत जगह तो NPA का वो कारण बना है कि खातों में जबरदस्ती हम लोगों ने TOL दे करके, TOD दे करके हमने क्या किया कि उसका प्रीमियम पे कर दिया, 1 साल का प्रीमियम पे कर दिया, दूसरे साल का कस्टमर के पास नहीं है, कस्टमर का ही है। तो इन सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और इसके पहले कि हॉल खाली हो जाए, 1 मिनट आप लोग 1 मिनट रुक जाइए भैया, और भी लोग हैं, आपने बुलाया है तभी लोग आए हैं। अच्छा, वो अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हैं, आइए। हमको लगा कि अंदर से बाहर। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, बैंकिंग विथ प्राइड एंड प्रेस्टीज, यू आर वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। संगठन के साथ रहिए। गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है आपकी एकता को तोड़ने के लिए। कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को पुश कर देगी, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को पुश कर देगी, ओनली बिकॉज दे आर इनइक्वल टू आवर स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। प्लीज गार्ड योरसेल्फ। और 2-4 लोग 10 लोग वैसे आपको समाज में मिल जाएंगे। जब मुगल आए थे इस देश में तो सेना लेके नहीं आए थे, उनको मालूम था कि इस देश में ही कुछ गद्दार मिल जाएंगे, उनको 600 साल रहेंगे। अंग्रेज जब आए थे तो यहाँ धंधा करने आए थे, वो सेना लेके नहीं आए थे, 200 साल रह गए, हमारे यहाँ से कुछ गद्दार पैदा ले लिए जो उनके साथ लग गए। तो हम आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप लोग अपने आप को गार्ड करके रखिए।
मैं एक बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि 24 तारीख को आपके यहाँ पहले जो एजीबी होने वाला था, आई पुट योरसेल्फ एंड योर इंटायर कमिटी इन हार्डशिप, क्योंकि मुझे स्टेट बैंक के ट्रायनियल सेशन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था 24 को, तो मैं नहीं आया। 23 तारीख को नेगोशिएशन हुए, 24 को आया। सोमो दिन भर मेरे साथ थे, सौम्या दत्ता जी। और इस बार भी मैं आया हूँ तो आई हैव कम विथ ए ग्रेट डिफिकल्टी। माई ग्रैंडसन इज नॉट वेल, वाइफ वाज शाउटिंग एट मी, आई हैव चेंज्ड माई टिकट, आई एम गोइंग टू रांची। My son, who is major there and a pilot, and my grandson is 1.5 years old, so he is not keeping well, otherwise I would have gone there. तो ये ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने 2 तारीख का मैंने ये कहा था, तो ये मेरा कमिटमेंट था। अभी जब यहाँ से हॉल से निकलूँगा, then I will forget everything apart from this वार्म अप ऑफ द लव एंड अफेक्शन विच दे हैव गिवन। और उसको खोल के देखूंगा कि उसमें गिफ्ट क्या है, खाली लग रहा था। मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। एंड देयर आफ्टर आई विल बी हैविंग सम अदर ऑर्गेनाइजेशनल एंगेजमेंट्स एंड देन टुमारो आई विल लीव। सो प्लीज रिमेन अटैच्ड। आप ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करिए, अपने लीडर्स को, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड आई एम वन पर्सन who replies, who puts point before even finance minister, DFS, everybody. No, this is not correct. Hardly anybody will do. No leader will do it. आप जैसे देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, आपको कोई भी लीडर नहीं दिखेगा, वो सब सेकेंड और थर्ड रैंक के लीडर दिखेंगे। मैं हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखूंगा। मैं भी धरना पे बैठूंगा, आप जो करते हैं मैं वो भी करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और आज भी साथ था, कल भी साथ रहूंगा। आप बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करिए कि आपका भविष्य कैसा होगा। आप सिर्फ बैंक की चिंता कर लीजिए, संगठन आपकी चिंता कर देगा। संगठन के प्रति वफादारी रखिए। वफादारी, द लॉयल्टी इज नेवर लॉपसाइडेड, माय डियर फ्रेंड्स। यू नीड टू बी लॉयल टू both the institution as well as to the organization। और आपका प्रेस्टीज के अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा इस बैंक में। योर सेल्फ रेस्पेक्ट विल बी इंटैक्ट। वी हैड अ वर्क टू रूल इन दिस यूनिट ऑल्सो, एंड द इश्यूज वेर सेटल्ड। वी कैन फाइट। वी हैड अ वर्क टू रूल इन दिस एनवीजी ऑल्सो। द जनरल मैनेजर हैड टू इंटरवीन। We fought without making much halla gulla. So we are there to set right the things. We have got very good understanding. Our top management is very good. Ultimately, they are agreeing, sometimes with difficulty, sometimes readily, whatever demand we are putting forth. So your APR, Nilesh was telling, your career progression. लेकिन आप वही करो कि आप स्केल 2 हो जाओ, 3 हो जाओ, और उसके बाद आप हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का सर्कुलर नहीं पढ़ो। डोंट बिकम ए फ्रूट रिपेन बाय कार्बाइड, देन यू विल बिकम ए पेरिशेबल आइटम। सो यू नीड टू बी a man with knowledge. Knowledge is the power. With this, I wish your session successful session, very successful session. I know that in days to come, your unit will be making our federation the strongest federation in the banking industry. As we are today, we will continue to have it, because we have a succession plan, and for implementation of that, I am a hard taskmaster. Even I will not compromise, as Nilesh was telling, that with the age of 35 years he is the working president. Another with the age of 35 years is Ganesh, who is the president of State AIBOC, and who is treasurer of the federation also. And our federation is the youngest federation. So the time will come gradually.
the succession plan, they will be in a position to take over, and gradually we will be going out of the scene, because वही है ना कि कभी कभी अब घर की याद बहुत आने लगती है। जिंदगी के वो दिन जो गंवा दिए, अपोलो हॉस्पिटल में रह के एडमिट होकर के कैंसर जैसे रोग से लड़ते हुए भी ट्रेड यूनियन करना नहीं छोड़ा। इवन जय इज विटनेस टू दैट कि अपने मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखने में मेरा वो कीमो चढ़ने के बजाय मेरे शरीर में से ब्लड निकल के और बोतल में जा रहा था और मुझे पता नहीं चला। आई एम इंडीड प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव दिस कमिटमेंट, that I can work for my friends, and I will always, this is my land, because I have taken second birth here, so my best wishes to all of you, on your personal front, on your professional front, you grow more and more, be happy, be contented, and do whatever you can do for the bank, and I compliment all who are sitting here on the dais for the good days ahead. इसलिए कि हमारा एनबीजी का जनरल मैनेजर खुश रहेगा, जोनल मैनेजर खुश रहेगा, डीजीएम खुश रहेगा, तभी हम लोग खुश रहेंगे, वरना हम तो फिर वही होता रहेगा। कोई दुखी आदमी किसी को खुश नहीं कर सकता। So I wish all the very best for all of them. Thank you very much for giving me this opportunity, or for that matter tolerating me, because I know that lunch is there and a lot of speakers are also there. But kindly forgive me for taking so much of your time, because for this time only I reached here yesterday and I will be leaving tomorrow. So for this 1.5 hours I have given so much of my time to this unit. That shows my love and affection for all of you. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bank of India, ours unity long live, Southern unit long live, Federation of Bank of India long live. Thank you very much. We heard the lion roar. Thank you, sir, for enlightening the audience with your vociferous and thought-provoking speech.